मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक कंप्लीट बिगिनर हो एट स्पीकिंग इंग्लिश एंड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. यू हैव अ ड्रीम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, बट you have no idea where to start this journey from. And today in this video I am going to help you with that, because in this video I am going to give you the exact path that you need to follow to become a fluent speaker from scratch. मैं इस वीडियो में हिंदी में भी बात करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो बोलते हैं कि आप इंग्लिश तो सिखा रहे हो बट आप इंग्लिश में ही बोलते हो. तो सो दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश, मिक्स ऑफ बोथ लैंग्वेजेस like English. And yeah, today in this video I am going to give you the exact roadmap that will help you speak English fluently. So I want you to watch this video till the end, because anyway you are going to waste this time watching something else on YouTube. So what if I say you that this video is going to help you speak English fluently? मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ which helped me speak English fluently, which made me a fluent speaker, and just I am requesting you to stick with whatever I am saying for the next 3 months. I am just requesting you to give at least 3 months of your time on English, and you will give 3 months, more than 3 months, if you are serious about improving your English. So before I tell you about the roadmap, I just want you to promise me. I want you to promise that you are going to give at least 3 months. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से promise करें that आप जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसको 3 months तक करोगे. Write in the comment section that you are going to be consistent with the tricks and tips that I am going to share with you in this video. Just comment below so that I will be able to know that my efforts are making a difference, like to make sure that, like, look at it like a project. Whatever I'm going to tell you in this video, मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखो दैट यू हैव टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो आपको 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है. ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक लॉन्गर दैन दैट, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स करके देखें. एंड इफ इट डजंट वर्क आउट, आई वॉन्ट यू टू कम टू दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट यू टू स्प्रेड हिट, एंड आई वॉन्ट यू टू जस्ट अनसब्सक्राइब माई चैनल इफ दैट डजंट वर्क. दिस इज माई प्रॉमिस. आई वॉन्ट यू टू जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. But before I talk about the roadmap, let me talk a little bit about me, so you will better be able to understand me, so you will better be able to relate to me. So मैं भी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहा था इंग्लिश में. मैं तो एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाता था विदाउट मेकिंग एरर्स. मुझे पढ़ना भी नहीं आता था इंग्लिश में, मुझे लिखना भी नहीं आता था, लेट अलोन स्पीकिंग इन इंग्लिश. मुझे सब कुछ सीखना पड़ा इंग्लिश में. आई हैड टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, मैं अभी भी रह रहा हूँ एक छोटे से गांव में जहाँ पे कोई इंग्लिश में नहीं बात करता, मैं भी इंग्लिश में नहीं बात करता. दैट इज़ वाई आई क्रिएटेड दिस चैनल टू मेक अ वे लाइक थ्रू विच आई कैन टॉक टू पीपल. तो मैं इसलिए इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया, एंड मैंने देखा कि लोग मेरे से सीख रहे हैं, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मोर कंटेंट्स ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एंड यू नो आई एम डूइंग गुड. तो that is how I started, that is how my English fluency journey started. मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, and I always struggled speaking in English, but I didn't let that thought कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता dictate my future. I think मेरे ड्रीम्स जो थे वो मेरे फियर से बड़े थे, and बड़े हैं. that is what always motivated me to पुश द लिमिट्स. इफ़ यू हैव अ क्लियर पर्पस ना, आपको एक क्लियर पर्पस चाहिए कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो. अगर आप वो फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है. नो मैटर वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, कि आपको अभी कुछ नहीं आता या फिर आता है, दैट डजंट मैटर. इफ़ यू हैव अ क्लियर वाई, इफ़ यू हैव अ क्लियर पर्पस फॉर वाई यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, दैट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू, लाइक टू हैंडल एनी हाउ. If you know your why, you will manage anyhow. Now let's talk about the roadmap. The first step of your roadmap is to learn basic grammar rules. या आप सोच रहे हो कि grammar rules कहाँ से आ गया? Yeah, grammar rule is very essential for learning English from scratch. अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोलता, आप भी इंग्लिश नहीं बोलते, आपको नो आइडिया कि कैसे इंग्लिश बोलना है, तो कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? एंड यू नो, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं जानता, बट दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड. मुझे कोई क्लू नहीं था कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ. मैं एक छोटे से गाँव में रह रहा था. आई हैड नो क्लू हाउ आई वॉज गोइंग टू लर्न इंग्लिश.
तो मैंने सबसे पहले ग्रामर सीखा, बेसिक ग्रामर. आई एम नॉट सेइंग यू टू इंडल्ज इनटू कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स. व्हाट आई एम सेइंग हियर इज टू जस्ट लर्न बेसिक ग्रामर रूल्स टू मेक श्योर कि आपको सेंटेंस बनाना आता है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू जस्ट लर्न टेंसेस, स्टार्ट विद टेंसेस एंड जस्ट फिनिश सेंटेंस. इट विल टेक नो longer than 1 week. It's not going to take that much amount of time. You are going to complete grammar in just basic grammar in just 1 week. That's how you have to start. मैं चाहता हूँ कि आप ग्रामर से स्टार्ट करो, सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाए आपको तो आप स्टार्ट करो. कुछ भी नहीं आता, यू हैव नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट, तो आप ग्रामर सीखो, टेंसेस से स्टार्ट करो so that you will be able to form sentences. And once you are done with forming sentences, you will automatically speak. So that's what I'm saying man. तो मैं ऐसे ही सीखा, मैंने ग्रामर से स्टार्ट किया एंड आई कंप्लीटेड बेसिक ग्रामर रूल्स. एक बार आप जान जाते हो कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं ग्रामेटिकली, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. लाइक वंस यू नो हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस ग्रामेटिकली, you will feel more confidence in you. So that's why I am saying you to learn basic grammar rules initially if you are a beginner. अगर आप बिगिनर हो तो आपको बेसिक ग्रामर सीखना ही चाहिए. अगर आप बिगिनर नहीं हो तो यू कैन मूव ऑन, बट इफ यू आर अ बिगिनर, लर्न बेसिक ग्रामर रूल्स टू मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस. Let's say you need to work on this project from Monday to Friday. Now I am going to tell you what to do on Monday, what to do on Tuesday or Wednesday. I am going to advise you what to do on a certain day. So on Monday, what you need to do is you need to be cramming short sentences. Yeah, this is what I did. I used to cram short sentences, short phrases that will help you become fluent later on. Like when you use short sentences in your conversation, you make your conversation sound easier and people are going to get your idea very well. So I want you to just cram short sentences and I want you to use that those short sentences in your conversation. Now let's talk about what you have to be doing on Tuesday. Yeah, on Monday you focused on learning short sentences, and now it's Tuesday and you have to focus on reading. Yeah, now I want you to read out loud. Pick up books that you find comfortable reading. Pick up books that suits you. Just pick up books that you find very comfortable reading. Get in the habit of reading and read out loud. I want you to read out loud so that you can hear your own voice. What will happen is it is going to expand your vocabulary. You are going to stumble upon some words or some sentences that you will not know the meaning of, and you will take help from Google in that situation, and that's how you are going to expand your vocabulary. I just want you to focus on reading. Read for just 1 hour every single day. You know, it's upon you how much time you are willing to give on reading, but minimum 1 hour is required. This is what I used to do. I used to read out loud so that I could hear my own voice, and you know what happened? I trained my tongue reading and I built my fluency along the way. So that's what I am saying you to do. If you want to get fluency, reading is one of the best options you can take, and read it. So on Monday you have to be focused on learning short sentences, and on Tuesday you have to be focused on reading out loud. And you know, I forgot to mention, you have to include listening every single day. Whether it's reading, whether it's learning short sentences, you have to be listening to English podcasts, English music, English whatever you find interesting. You have to include it on every day. And start with cartoons. I am suggesting you cartoons because it is only meant for children and you will understand it better. Now let's talk about what you have to be doing on Wednesday. मैं अब बात करूंगा कि आपको Wednesday के दिन क्या करना. Wednesday के दिन मैं चाहता हूं कि आप लिखो for 1 hour every single day. मैं चाहता हूं कि Wednesday is the day when you have to write something or the other. मैं जानता हूं कि आपको लिखने नहीं आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको अपने आप को फोर्स करना है कुछ लिखने के लिए. अगर आप फोर्स करोगे तो आपको कुछ ऐसा लिख दोगे जो आपने पहले कभी नहीं लिखा. It will be new words, and the more words you will know, the easier it will be for you to express yourself in this language. So it all starts with you writing
योर थॉट्स डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एवरी सिंगल डे। तो आप अगर रोज लिखने का एक हैबिट डाल लेते हो, दिस इज द रोड मैप दैट आई फॉलो टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इन दिस लैंग्वेज। Writing helps you improve your sentence formation, it helps you expand vocabulary, and it helps you in many ways. It helps you with clarity of thoughts. When you speak English, you have clarity of thoughts on what to say next. That's how I started. Yeah, on Monday it's learning short sentences plus listening. On Tuesday it's reading out loud plus listening, and on Wednesday it's writing English plus listening. Yeah, I am including listening in everything because it is the element that is going to help you become a fluent speaker. It's one of the best thing that you can do to become a fluent speaker in English. Now let's talk about the next step of the roadmap, which is active listening. It is one of the best technique you can use to become a fluent speaker as soon as possible. आप इसे एक बेस्ट टेक्निक मान सकते हो, एक्टिव लिसनिंग। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो यू फोकस ऑन स्पीकर्स, देयर एक्सप्रेशंस, देयर वर्ड्स। आप हर एक चीज को सीख रहे होते हो, एंड ये आपको नेचुरली लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना सिखाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी सुनो उसको एक्टिवली सुनो। ये नहीं कि आप पैकेट में फ़ोन डाल लियो, इंग्लिश गाना प्ले कर दियो एंड आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नो, दैट टाइम वुड बी बेस्टेड। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी कुछ इंग्लिश में सुनो तो उसको एक्टिवली सुनो, जब भी कुछ देखो तो उसको एक्टिवली देखो कि सर्टन वर्ड्स बोलते हुए उस स्पीकर का एक्सप्रेशन कैसा है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द लैंग्वेज वेल। तो I want you to listen actively every single day, and मैं चाहता हूँ कि आप जो भी सुनो उसे रिपीट करो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब यही होता है कि आप जो कुछ भी सुन रहे हो उसको रिपीट कर रहे हो बार बार। लेट्स से कि समवन इज सेइंग कि कम हियर, तो देन आई विल से कम हियर। आई वांट यू टू प्ले अ dialogue, then I want you to listen to one sentence, then pause that dialogue, then repeat that sentence until it gets you into your mind, until you learn how to say that sentence, and repeat the process. And this is how you are going to learn how to listen actively, and this is going to make you fluent very soon.